Hello students, a very good morning to all of you. So today we are continuing our model paper solutions. Okay, and students, I am sending you also the questions and all these solutions images. So first try to solve these questions by yourself. If you not get understand the questions how to solve them, then take the reference of this video and these solutions. Okay, if you not try to solve yourself, then you will not clear your concepts. Okay, first try it to solve it yourself, then if it not get solved, then see these solutions. Okay, so our first question is saying that find the compound interest of rupees 4000 at 5% per annum for 1 year if interest is compounded annually. So what we need to find it out here, that the compound interest. Okay, so how we find out the interest? हमारा इंटरेस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अवर कंपाउंड इंटरेस्ट? हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ अवर कंपाउंड इंटरेस्ट? सो इंटरेस्ट का व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट? इंटरेस्ट अमाउंट, आवर इंटरेस्ट अमाउंट इज what is our annual amount, or what is the annual amount minus principal amount. Okay, this is an total amount which we return to anybody to which we from which we take the money. Okay, यानी कि हम जिस किसी को भी जो टोटल मनी वापस जो रिटर्न करेंगे वो तो आ जाएगा यहाँ पे ए में, एंड द पी इज़ आवर प्रिंसिपल अमाउंट विच वी टुक ऑन द इंटरेस्ट, मतलब कि जो बेस वैल्यू जो हमने किसी से लिया है, ठीक है, ऑन द इंटरेस्ट. So this is the formula of our interest amount, or the total amount minus principal amount. So here we need to find it out. First here the principal amount is given to us, that the 4000, but we need to find it out the total amount which we are going to return. Okay, so here the values which we are given to us, first we write it here, that the principal amount is given to us 4000 rupees. Okay, then rate of interest is given to us 5%, then number of years is given to us 1 year time period. Okay, now the formula of value of A is what? P, principal amount, multiply with 1 plus R dividing by 100 to power n. Okay, so कंपाउंड अमाउंट जो आएगा हमारे पास, कंपाउंड अमाउंट, इसे हम कंपाउंड अमाउंट भी कह सकते हैं. ओके, कंपाउंड अमाउंट, ओके, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस आर. आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर मीन्स क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडिंग बाय 100. सो ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट हियर, पुटिंग द वैल्यूज 1 प्लस 5 बाय 100 year, n means time period of in the years. Okay, so 1, here we get 4000 multiply with, here we get on this 100 plus 5 dividing by 100. So what we get here? 21 by 20. On solving this, what we get here? 0 0, then cut, it will get 2, then 200 multiply with 21. So 200 multiply with 21, we get here 4200. Now we put this value in our interest amount. So interest amount is equals to what? A minus P. That means A is our 4200 minus principal amount is given to us 4000. So we will write here 200 is our interest amount, 200 rupees. The question number second is saying that solve the algebraic expressions of this and find out the value at the P is equals to 1. So what the algebraic expression is given to us? 6P minus 7 then plus 5. So on first solve this expression, what we get here? We will multiply this P with all the elements present in this bracket. So P get first multiply with 6P, so we get here 6P square minus, then 7 will get multiplied with P, then we get here 7P plus 5. Now here 6P square minus 7P plus 5. Now on putting on P is equals to 1, on putting the value of P is equals to 1, what we will get here, that the 6 1 square minus 7P की value 1 plus 5. Now 6
1 का स्क्वायर करेंगे वापस क्या मिलेगा हमें 1. ओके, सो 6 1 का 6 माइनस 7 प्लस 5. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट विल गेट हियर, -1 प्लस 5 it will be plus 4. So our answer is 4. Now coming to our third question here, find the product of this expression. Means we need to find out the product, means the result of the multiplication of both these elements. Okay, so first we will write here x plus 7 multiply with y minus 5. So listen to me, how we will solve this. Okay, here what we will do, we will multiply this x with first y, then this x will get multiplied with minus 5 here, then this 7 will get multiplied with y, then this 7 will get multiplied with 5. Okay, so we'll write here that in our result first x will get multiplied with y, so we get xy, then x will get multiplied with minus 5, we will get minus 5x. Now this 7 will get multiplied with y, so we get 7y, this 7 will get multiplied with minus 5, we get 7 5s are 35. Okay, now 7 xy minus 5x plus 7y minus 35, what will be its result now. Okay, so this is our result and बस जस्ट यही हमें यहाँ पे सॉल्व करके बताना था कि मल्टीप्लाई करके क्या होगा. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. ओके, factors of this number. So how we will solve the factorizations of this expression? First write here the question. Okay, now first see here we can put a equals to 0. अब देखो इनमें से सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है ना, डेट नंबर हमें पहले कॉमन निकाल लेना हमेशा. ओके, एनीथिंग इन आवर मैथ्स फर्स्ट इफ़ वी गेट एनीथिंग कॉमन देन टेक दैट कॉमन. ओके, उस कुछ भी नंबर अगर हमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है. So first take the common, if I take the common this 3 from whole equation we get here y square plus 3y then plus 2 is equals to 0. Now अब देखो ये जो 3 मल्टीप्लाई में if I send this 3 on in the opposite sides it will goes to the dividation of 0. So 0 से अभी हमने देखा है कि 0 से किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द रिजल्ट अगेन 0. इट मीन्स इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर वी गेट द रिजल्ट एज एन अ 0. करेक्ट. सो हियर द रिमेनिंग इक्वेशन विल बी 3y square plus 3y plus 2 is equals to 0. Now we need to factorize of this equation. So here we need to first write that y square plus हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 3 को ब्रेक करना है. ठीक है, सो पहले ये इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेते हैं हम. अब यहाँ पे हमें केवल क्या करना है, इस 3 को ब्रेकआउट करके लिखना है. अब देखो यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ 1 स्क्वायर इज़ y स्क्वायर इज़ 1. ऑन मल्टीप्लाइंग 1 विथ 2 वी गेट 2. अब हमें 2 ऐसे दो नंबर्स चूज़ करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिले 2 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिले 3. So how we'll get on multiplying with 2? Suppose if I multiply 2 with 1, 2 ones are 2, I get 2 and 2 plus 1 it will be 3. So it will be satisfying our both the condition. We will write here 2 plus 1 क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं we get 2 and 2 plus 1 करने पे हमें 3 मिलता है. So we get 3. Now y square plus 2y plus y plus 2 is equals to 0. Now take the common from both these terms and both these terms. So we get here y plus 2 then plus 1 common आ रहा है y plus 2. It will be y plus 2 and y plus 1. So equals to 0. So here we get y is equals to minus 2 and y is equals to minus 1. Okay, but we can put our solutions up to here. This is our answer. Okay. Now our question number 5 is saying that if the market price of a mobile phone is rupees 1600, if it is sold in rupees 200 to 1200 rupees, then find the discount and percentage discount. देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है पहले वो इन्फॉर्मेशन हमेशा लिख लीजिए. ओके, राइट इट डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन टू यू इन क्वेश्चन दैट द मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 1600 and the selling price is equals to 1200. So the discount percentage हमें क्या बोला गया है फाइंड आउट करना. So what is the formula of our discount? डिस्काउंट क्या होता है हमारा मार्केट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस। ओके, यही होता है हमारा फॉर्मूला। सो मार्क प्राइस इज गिवन टू अस 1600, सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस 1200, सो द डिस्काउंट अमाउंट इज 400, डिस्काउंट अमाउंट इज 400 रुपीज़। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट परसेंटेज? इज डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडिंग बाय marked price multiply with 100. Okay, so this is another formula for the discount percentage. Now putting the values of all these, we get the result which we need to find it out. The discount amount, we have find it out that the discount amount is 400, and dividing by the mark price, the mark price value is 1600. Okay, on multiplying it by 100, 2 zeros 2 0 will be cut, and 4 ones are 4, 4 4s are 16. It will give us result 100 dividing by 4. It means it will be 25%. Okay, so this will be our answer. So students, try to solve these questions first yourself. If you do not understand the questions, the solution, then take the reference of this video and all these solutions. Okay, thank you.